हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सिंथिया रिची के इल्जामात के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप पर ज्यादती के और मैन हैंडलिंग के इल्जामात लगाए हैं। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सिंथिया रिची। सिंथिया, यस्टरडे इन आवर प्रोग्राम अली हैदर गिलानी, सिंथिया कल हमारे प्रोग्राम में अली हैदर गिलानी ने और इससे पहले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आपने उनके ऊपर मैन हैंडलिंग का इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के एक और बेटे कासिम गिलानी ने आपके खिलाफ FIA में कंप्लेन दायर की है, इसीलिए आपने उन पर यह इल्जाम लगाया है। You're accusing Yusuf Raza Gilani for manhandling you. Not at all. In fact, I don't even remember reading anything about him. And even if I had, that's not who I am as a person. And I think I recall reading that Prime Minister Gilani denied even meeting me but one time at a diplomatic reception. Any of the intelligence agencies or anyone in the authorities can look in the logbooks and see that I was at the presidency's house at a particular time several years ago, not long after Prime Minister Gilani was ousted as Prime Minister. Those logbooks are kept as records. That's fine, Cynthia, but are you accusing Yusuf Raza Gilani? क्या आप इसलिए इल्ज़ाम लगा रही हैं क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ FIA में कंप्लेन दर्ज की हुई है और उस कंप्लेन के ऊपर आपने अपना जवाब भी जमा करवा दिया? After those complaints were filed with the FIA. Absolutely not. I have nothing to gain from this. I have nothing. Look, I have been manhandled by a number of men. This is for men across the country. Okay, but I have only been raped by one person. I have been assaulted by a couple of other men, of which I will tell later. I was writing my memoirs on this. I have no interest. I don't gain anything from this. I have, however, been harassed by PPP for the past couple of years, and I have tried to use my contacts privately to ask them to please quit harassing me online. And when they finally started targeting my sisters and created a fake account and tried to trick them into thinking that we had a long-lost sister from my deceased father's previous marriage, my sisters, who are very naive and who are nice to everyone that they meet, actually disclosed a lot of deeply personal family information, which was later leaked on Twitter, and I was tagged by it by PPP accounts, and I had to report them to Twitter. So it's become personal. I've been dealing with this for months now from PPP and PTM. It's not just recent, and I tried to handle it politely. I didn't go to FIA before because the last time I went to FIA, when I was harassed by this Farhan Burt guy, they did absolutely nothing. Absolutely nothing. So I am at my wit's end. I am being harassed. I have been sent death threats. I have been sent rape threats by the so-called greatest Democratic Party in the country. Give me a break. If this is happening, obviously this cannot be defended. It should be condemned. And अगर ऐसा हो रहा है तो वो यकीनन गलत है, उसकी मुज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन इसका एक मुकम्मल बैकग्राउंड है। ये जो ट्विटर पे लफ्जी जंग आपके और पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स के दरमियान पिछले 7-8 दिनों से जारी है, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये जंग आपकी वजह से शुरू हुई। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से पार्टी के फॉलोअर्स में बहुत गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो ये इस तरीके से शुरू हुआ, आप उन पर इल्ज़ाम लगाती रही और वो आपके बारे में इल्ज़ाम लगाते रहे। When it started, and obviously consequences were that they were accusing you, and as you said, they were harassing you as well. No, this is not when it started. This is a smokescreen that PPP is using because they know I was getting closer to discovering their connections with PTM. What I actually said in the Twitter, and I come from the South of the United States where it's considered very disrespectful to speak ill of the dead. If you read my tweet and my clarifying tweet, what I said was, this echoes stories. I was horrified to see this video of this woman encouraging the rape of this young girl by her guards. And because I had been sexually assaulted, because I had been raped in this country, I immediately was triggered by that. And I responded, this echoes stories that I have been told of what another woman has done from Benazir Bhutto. But this was told to me by senior leaders, senior PPP sitting ministers at the time. And they seem to do so almost in a perverse manner. This has got to stop.
this male harassment, this subjugation of the women, and more importantly, women, this power play is a pattern in Pakistan, and we cannot stop. We Are you cannot saying not talk about it. आप ये कह रही हैं कि जो कुछ आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लिखा वो मालूमात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने दी थी? Yes, and it's almost as if they relished in it. It was a very perverse thing. I felt sickened by that. My tweet was in no way intended to defame a deceased woman. There were some things about Benazir Bhutto that I very much admired. There were some things Cynthia, that I did admire. And in fact, I made a statement in my FIA report that at one point I actually wanted to interview Bilal because I felt like that he might have the potential of being a future leader of Pakistan because I found him to be a bit different. And people in People's Party have known, including the Interior Minister Rahman Malik. I made a specific request a while back to please introduce him to Bilal because I would like to have a sit-down conversation with him of what he promised to do. 2 or 3 others did. So this has nothing to do. It's not a vendetta against anyone, but justice must be served. If I am found to be telling a lie, then I will meet my punishment. I will face my punishment. I am not going anywhere. But I will not stand for this proxy BS that PPP uses to intimidate and subjugate. And let me tell you one more thing. The rape threats, the death threats that I have received from the men have been horrendous. But the words of encouragement that because PPP leaked my numbers and my personal information online. But the number of women that have privately messaged me because they're sick of the Dari's PPP has been all equally overwhelming. It is the Dari's filthy PPP that has... सिंथिया, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा. ये बताइएगा कि आपने अपने FIA को स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि ये तमाम तर मालूमात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने प्रोवाइड की, बल्कि आपने ये कहा वर्क विद द अथॉरिटीज टू शो द एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव दैट योर ट्वीट वाज नॉट फॉल्स and therefore it was not defamatory. So you are saying you have आप कह रही हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगी. I will do whatever is necessary to prove everything that I have said has been accurate, and I will work with authorities to the best of my ability. No, couple of more last questions because एक दो और सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि जब से ये इल्ज़ामात सामने आए हैं इससे और सवालात भी खड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने इन सवालात को अपनी कंप्लेन में भी उठाया है. मिसाल के तौर पे उन्होंने पूछा है कि सिंथिया रिची किस वीज़े पर पिछले 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है बतौर ट्रैवलॉगर. पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ट्रैवलॉगर्स आए जो कि चले जाते हैं, लेकिन आप मुसलसल पाकिस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं. तो क्या आप बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान में आप किस वीज़ा पर काम कर रही हैं? It's none of their business. The authorities and the appropriate authorities know what I'm working on. I am responsible to the government as a resident here. I am a law-abiding resident. Okay. End of story. Right. Today, People's Party leader Saeed Ghani, he said that obviously all your claims. आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर सईद गनी ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि आपका किरदार मशकूक है. उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी के एजेंडा पर काम कर रही हैं और ये इल्ज़ामात भी उसी एजेंडा का हिस्सा है. आप सियासी पार्टीज़ को मलाइन और बदनाम करती आई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्ज़ामात उसी एजेंडा का तसलसल है ऑफ एक्यूजिंग एंड डिफेमिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़. My agenda is the truth, and I would expect someone like him to say something like that. The truth will come out in court, and in the court of public opinion. Of that, I have utmost faith. Right, but when I saw your timeline, obviously when I was researching, and लेकिन मैं भी आपकी टाइमलाइन देख रहा था और आप क्लेम करती हैं कि आप ट्रैवलर हैं, ट्रैवल लॉगर हैं और आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाती हैं, लेकिन आपकी टाइमलाइन तो इल्ज़ामात से भरी पड़ी हुई है. आपने सियासी पार्टीज़ को, सियासतदानों को, सिविल सोसाइटी पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं. ये इल्ज़ामात सियासी क्रिटिसिज्म की सूरत में भी हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हरासमेंट और रेप के इल्ज़ामात हैं और यहाँ तक कि आपने लोगों को ट्रेटर भी कहा है. आपने सियासी पार्टीज़ को एंटी स्टेट पार्टी भी कहा है अपनी टाइमलाइन पर. तो ये सब पढ़कर ऐसा तो नहीं लगता कि आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आप किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि काफ़ी सारी पार्टीज़ को टारगेट कर रही हैं. आप पीपल्स पार्टी, नू लीग, ANP, PTM को ख़ास तौर पर टारगेट करती रही हैं. Yes,
I wanted to show the positive parts of Pakistan, but I also wanted to be objective. There's just as much bad things happening here as there are good things, just like in the United States. And tell me, how many Pakistanis live in the United States? And how many of those Pakistanis are very vocal in politics and express their opinion? Why should I be treated any differently? हाँ, लेकिन आपकी ज़्यादातर टाइमलाइन इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। आपने जो स्टेटमेंट एफआईए को दिया है उसमें भी आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। जैसे मैंने कहा, आप क्लेम करती हैं कि आप एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, लेकिन अपनी स्टेटमेंट में आपने ये कहा है कि आप पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीएम दोनों एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। और साथ में आप ये भी कह रही हैं कि तमाम कार्रवाई जो आपने की है, इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है, इसमें आपको स्टेट एजेंसीज़ ने सपोर्ट किया है। तो जब आप कहती हैं कि आपकी टीम इस नतीजे पे पहुंची है कि पीपल्स पार्टी एंटी स्टेट पार्टी है, तो उसमें आप अपने आप को अलाइन कर रही हैं स्टेट एजेंसीज के साथ कि उनके साथ मिलकर आपने ये तहकीकात की है। I am a freelancer. I do a variety of work. I was labeled an agent when I was doing positive work for Pakistan. And now I'm being labeled another agent because I'm showing a different side of Pakistan. Pakistan, as you know, is like a multi-layered onion. There is not everything is perfect here, just like in America or any other place. But if I find something that is interesting, and I have worked in politics most of my life, also, that's a big part of my background in the United States. So when I see something that emerges as a human interest story, I wanted to do a story that was different from the more positive things that I was trying to do. And when I started looking into this human rights, accusations, I found some things to be accurate, but I found a lot of things that were not accurate. And when I started getting harassed by PTM and PPP, that's when I started deciding, okay, let's see if there is going to be an alignment. Otherwise, why would PPP, who claims to be the most democratic, forward-thinking party in Pakistan, be harassing me, and why would they target my family? Well, it's one thing to call me names. It's one thing to call me Jasus. It's one thing to say a Tazish about me. But when you start targeting my family and my deeply personal family information starts getting leaked, that's where I draw the line. And this happened several weeks ago. And I privately asked a number of members in the PPP to please ask their lower tier members to stop harassing my sisters, to stop harassing my family on social media. They can harass me all they want to, but this is where I draw the line. Obviously, if this is happening, it should stop. But thank you very much for your time, Cynthia Ritchie. Thank you very much for joining us. Cynthia Ritchie आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और हमने उनको बताया कि जिन जिन पर आपने इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन वो कहती हैं कि वो अपने इल्ज़ामात पर डटी हुई हैं और उनको साबित करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन उनके इल्ज़ामात की जो तरदीद आई है उस पर हम बात करेंगे।